Is it visible to all of you? Hello. Yes, sir. Visible, sir. Not visible or visible? Visible, sir. Oh, great. Okay. Thank you. Can we start, or you still need 1-2 minutes break? Can we start now? Yes, sir. Okay. Yes, someone said that. All of you are okay? So once again, good morning. Good morning, sir. Good morning. Oh. Good Only morning, one sir. to, I can hear about only 1 to good morning. Okay. Good morning, Suni Pammi. Good morning, sir. Good morning. So morning should be fresh. And when you start the finance class, from a source I got, finance people say good morning in a different way. They say good to earn more money is good morning. Okay, that's fine. So today I'm going to start the next chapter. That we'll be having 2 chapters in 1 unit. So there are 5 units, that will be 10 chapters, and we are having 10 classes, right? So let me start, because time is very precious for us. On today's the second unit, it is heading our subject, merchant banking and financial services. I started the financial services as because it is a part of financial system. I thought to start with the financial system, then I entered to the financial service. And today we will be discussing the merchant banking division, which is also again a part of financial services. Friends, Indian equity market. Before I go for what is merchant banking and all, let's have some idea about this. If I look at the equity market, Indian equity market have grown robustly after the India introduced a series of economic reforms. In 90s, when Dr. Manmohan Singh was the finance minister, Prime Minister Dr. P.V. Narasimha Rao. Second, third person our finance secretary, Mantek Singh Ahluwalia. Right. 3-person role. It was a very crucial role that time, because India was, planning for a economic reform, right? And we had a very bad phase that time. So far as the foreign exchange reserve is concerned, so far as the this unemployment crisis, so many issues and challenges it was there that time. Because what we see, the new India, new India, Nutan Bharat, reforms, whatever things we say, it starts from 90s. Okay, so 1991, they introduced a concept set up a coach called PLG, privatization, liberalization, and globalization. Prior to that, we need to follow the we follow most of the Gandhian principle. That's, of course, it's good, of course, because today's newspaper, I was going through it, somewhere around 235% increase in the Khazi and village industries, because there is a demand of that. So Gandhian philosophy was based on Swadeshi movement. It was with an expectation that most of the people, they live in the rural sector. We are not technologically sound, and our industry was not that automated forms of technology. I'm going to go to the restriction pillar. So we follow the Gandhian principle
or Swadeshi principle that ଆମେ ନିଜେ ଆମର ନିଜେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ନିଜେ ଖାଇବା, right? That is good up to a certain extent. It's not bad. It's a fantastic, rather I can say. But when we look at a new India competing with the international market, then we realized जो आमे गोटे एक्ट हला MRTP, monopolistic restrictive trade practice. Our trade practice, it was restricted with many extent. Trade practice, it was restricted. So সেই সব জিনিস को आमे चिंता करी कि the three person, legendary person that type, they introduced privatization, liberalization, and globalization, right? They introduce a concept that speaks about the abolition of monopolistic restrictive trade practice. Okay. So primarily, companies, not exposed to generate the capital, think for expansion, diversification, modernization, technological operation. एते जिनस हमें भाभी पानो और हमें कहूचे ऑटोमेशन एबे तो मोबाइल हमें 4G को छाड़ी के 5G को जाई छे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटा कोन कहउछते बुझे जे पर G4 कहउछते Gen 4 Gen 5 बुझी गलेनी कोन सेटा कहउछते बाइक गुडा करे सब आजिकल आसुची so youngster must be very much better than me. So there was no such good opportunity to explore. But during that time, the companies raised money in the form of equity and debt, including the private placement. आपण मन को जोटी असुविधा हबो मते आपण पचारिबे काना मु काहा को देखि पानी वंस पीपीटी हे गेला माने आ मते काहा को देखा जिबा राइट मु खाली पीपीटी ही देखि ओ पीपीटी देखा जाउची तो आपण मन देखि परछंती आमे ऑडिबल प्रॉपर्ली Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So the various issues, I still remember आपण माने chittarghar.com मन लेखि नियंतु गोटे कागज रे इन योर नोटबुक रे chittarghar.com जिबे chittarghar.com गोटे कंपनी रो वेबसाइट सेथिरे आपण आईपीओ रो डिटेल्स पाइबे आईपीओ माने कोन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग I have seen personally I'm settled stock market रे थिलु 92 to 95 96 पर्यंत देखिए आईपीओ एकदम भर्ती जाउता 50 60 100 तक वाला भर्ती जाउ वर्तमान देखिए 10 15 सी भी डिफर करचोंती काना मार्केट इज नॉट फेवरेबल लेट अस वेट फॉर द मार्केट हम तो एलआईसी को बहुत भलो भाबरे देखिले आपण मान देखिथिले इश्यू प्राइस केते 940 पाखा पाखरे आसिला जेतोले खोलिला आमेन सब बहुत एक्साइटेड हे कि थिलु मोर तो बहुत स्टूडेंट कहले सर लेट अस बाय द एलआईसी कहले चलो ठीक है एलआईसी गोटे करथिला the those who having policies they will get the priority to get the subscriptions or the IPOs allotment मिलियो unfortunately how कि fortunately मते allotment मिले I was very delighted और बहुत स्टूडेंट पाई गेले allotment कहले सर we are very happy बोले अरे मते मिलला चलो ठीक है it's not an issue but आपण माने मार्केट रे देखि चंदी कि मैं जाननी the market जेतो खोलला डिस्काउंटेड खोलला जो द ट्रेडिंग डेट रे 800 सम अमाउंट रे स्टार्टेड 940 रु 853 857 880 रे द मार्केट खोलेला आपण डे 1 रु द मार्केट इट वाज नॉट बेटर सो बेले बेले कोन होची वर्तमान टाइम रे द इश्यूज आर companies are waiting for a favorable market conditions right so आपण माने पचारि परिवे आपण तो मर्चेंट बैंकिंग पढिवार अछि ये सब जिंस काहे के कहउछ why yes there is an important why because these are the certain things which is being monitored by the merchant banking division right merchant banking divisions or merchant banking houses or merchant banking companies ये जो जिंस गुडा को मॉनिटर करंती पब्लिक इश्यूज एक्टिविटीज को so the various issues मोतिनटा जिंस कल इक्विटी डेट प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यूज जिंस the various issues made by
and Indian companies can be classified as public issue, rights issue, bonus issue, private placements, etc. I hope Bhabuchi apan mane janithibe what is the difference between rights, bonus, and all those things. Rights issue is an offer to the exist. Yeah. सर आपनकर स्लाइड टा ओनली मर्चेंट बैंकिंग आ डॉक्टर पीडी दास करी सेटा सेव करछ अलगा किछि सेव करनी मु जाइनी एक्चुअली अच्छा डोंट वरी आई विल गो वन टाइम अच्छा ठीक है मु तक हटै दोछि हला आଜ୍ଞା अच्छा ठीक है सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एई जिंस गडाक हमर सिलेबस रे अछि concept functions growth policy SEBI guidelines future of the merchant bank in India मु कहउतली आपण मन को जे केते प्रकार इशू अछि हमर इंडियन सिस्टम रे कोन अछि पब्लिक इशू जेटा हम आईपीओ कहउतलु इक्विटी पार्टिसिपेशन पई राइट्स इशू बोनस इशू आ प्राइवेट प्लेसमेंट एगुडा गुडा सोर्सेस ऑफ जनरेशन ऑफ फंड अछि डेट मॉनिटर बॉन्ड इशू भी अछि एगुडा सब अछि what is the difference between right and bonus सेटा हम जानबा राइट्स इशू कोन जतबेले कंपनी प्लानिंग फॉर एक्सपांशन करूची कि ऑटोमेशन करूची टेक्नोलॉजी ऑपरेशन करूची किछि भी के को एक्वायर करूची मर्जर एक्विजिशन को जाउची at that time he needs additional fund instead of going for another IPO which is very tedious activities बहुत परिश्रम करे I can ask to my existing shareholder मते पैसा दरकार हला मु काहे कहबी आपण माने मोर जो स्टूडेंट अछि फर्स्ट प्रायोरिटी मु देबी कोन पई देबी जदी मु existing company अछि I am giving some benefit to you then you will rely more market credibility भल अछि so आपण माने कहबे ना ना सर को जो कंपनी अछि इट्स अ गुड वन so आमे जेतु we are one of the shareholder the current market price is very good market capitalization is good so टर्मडा जो कहूची आपण छोट छोट जगह रे लिखि दी थांतु मार्केट कैपिटलाइजेशन एवडे टर्म कहली इज वेरी इंपोर्टेंट टर्म्स हमें बहुत टर्म्स यूज करू एतरे एबिटा मार्केट कैपिटलाइजेशन पीएटी ईपीएस आपण माने जानि थिबे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढला बेले जानि थिबे टर्म गुडा कम सब सिखि थिबे आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस सो आई नीड टू अप्रोच मु काहा को कहबी मोर एक्जिस्टिंग स्टूडेंट मानु कहबी बिकॉज़ दे अंडरस्टूड मी दे रिलाई ऑन मी ना आपण माने मत रिलाई करछन एज ए टीचर हिसाब रे सो मु कहली मोर एक्जिस्टिंग स्टूडेंट को कहली मोर गोटे कार्यक्रम करिया पय सपोज गोटे गछ लगाया पय राइट और गोटे ब्लड डोनेशन कैंप करिया पय समथिंग आई एम प्लानिंग इन द माइंड फॉरगेट अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंस so instead of going to the public asking them they may accept may not accept but I can tell to my students okay I can tell my DDC students my regular students I can tell because I feel I have a rights to them so they have also rights on me so it's a reciprocation right so this is the rights I'm approach so the company concurrently they used to go for when there is a need of additional fund they first knock the door of the existing shareholder ताको पचानती बाबा तमे कोन मोर राइट्स इशू नबो सो जो कंपनी रो मार्केट प्राइस भलो चली छी सपोज आपण रिलायंस हला आपणकर इन्फोसिस हला आपणकर एचडीएफसी हला ए सब जो भलो भलो हमर कंपनीज अछंती कि एसीसी हला बडा बडा कंपनी सब जो अछंती से मानको जे राइट्स इशू कले लोक पागल हो जाते क्या मार्केट प्राइस ऑलरेडी अधिक अछि they will get it in the better price and that can be an additional this is what right issue bonus issue kon rights issue रे इन्वेस्टर को पैसा दबाव पड़े बोनस माने कोन बोनस तो बोनस राइट बोनस मींस एडिशनल थिंग भलो काम कली मते सर बोनस दली so that is what suppose I'll share my personal experience also I purchased one stock the name is Jim Laboratories आपण से ओटे एबे मु देखुतली कोन गैस पास बटिया करथि Jim Laboratories I purchased at 35 35 टका रे किनिथिली 500 यूनिट्स किनथि ताको होल्ड कली बहुत दिन पछ around 2 years होल्ड कली every year he used to give me 10% dividend 10% dividend होतला ता माने
he was doing a consistency profit kal ta dividend daba nal dei paribo. Subsequently, after 2 years, I think after 2 years, I observed the market price is increasing 35 to 75 80 and जाउतला से बेला. Suddenly I got a bonus माने से डिक्लेयर करला 1:1 जा माने जा पाखरे गोटे शेयर थियो आ गोटे शेयर से फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मो पाखरे 500 शेयर थला मते आउ एडिशनल 500 शेयर थला. जेतले कंपनी बहुत प्रॉफिट करे with the profit is a part of the shareholders. So the shareholder पैसा because हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करते equity shareholders, right? आपण मन जानते हो equity shareholder preference shareholder पढ़ी थी कंपनी एक्ट कोला पढ़ी थी उसको तो ताको डिटेल्स बनी. So I got 1:1 माने तापाने माने कोन जा पाखरे गोटे थिबो ताको आ गोटे मिलियो. तो मो पाखरे 500 शेयर थिला मते आउ 500 शेयर मिला 1000 शेयर. जेतोळे मार्केट गला 120 ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମୁଁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି. ଗଲା ଆଉ ଉପରେ ଭରସା କରିହେବନି. ବୋନସ୍ ପାଇଗଲିଣି ସବୁ ପାଇଗଲିଣି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବହୁତ ନେଲେଣି ତ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ. ମାର୍କେଟ 20 ପରେ ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ବଢିଥିଲା 24 ପରେ ଖସି ଯାଇଛି. ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଖସି ଯାଇଛି. ମୁଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖୁନି ମୋ ରାଡାରରେ ରଖିନି. ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ. ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ. ଏତେ ରିନାଉଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ मीडियोकर कंपनी. अपन जब चित्तरगढ़.com देखिए तो बहुत तळे देखैबो. रिकमेंडेशन भी स्ट्रांग नहीं बट समटाइम्स यू नीड टू स्टडी देयर बैलेंस कौन आपका स्टेटस होच. ओके फ्रेंड्स, माय ऑब्जेक्टिव ऑफ सेइंग दिस कंटेंट इज दैट द एंटायर प्रोसेस इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द मर्चेंट बैंकिंग division, right? So a merchant banker, I am now entering to the concept of the merchant bank, right? So this is what an overview. Raising of capital by corporates or companies and subsequent listing and trading of these instruments at stock exchange requires a set of intermediaries, each assigned with a particular task so that the transaction is completed with delivery of security and fund. What is this I am trying to tell you? That when we go for IPO or we go for rights issue or we go for whatever things we used to monitor, it is being monitored through the merchant banking division. And these instruments, equity, debt, bond, preference, these are the instruments which is being monitored by a specialized company that's called merchant banking, right? So a merchant banker, also we call them investment bank. Merchant bank or investment bank is appointed for a public issue by the company, right? Because company may not have adequate knowledge to follow the guidelines of the public issue run by Security and Exchange Board of India. So they act as an intermediary. Who? This merchant banking division, they act as an intermediary. And what is financial intermediaries, financial instrument, and so forth. They act as an intermediary and matches the seller of stock. The company or corporations or corporate matches the seller of stocks with the buyer of stocks. Buyers के the public, right? So जो माने केळु चेताकू शेयर होल्डर भी अंतर पहुंचे. सो आमे जो पब्लिक तक रखी शेयर होल्डर केतेळे हबो मु किनी साला पर हबो मोर जदि अलॉटमेंट आसीला मु हे करी तापुरु हे करी तापुरु आम जस्ट पब्लिक. So an investment banker or merchant banker function is same as to a commercial bank. The merchant banker, they facilitates the flow of work in raising of the money from the market. Market रू पैसा केमिति आसीबो देखियो आपण खबर कागज रे बाहरे जनरली इकोनॉमिक्स टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड देयर इज वन मोर न्यूज़पेपर, इज अ गुड न्यूज़पेपर दैट इज कॉल्ड मिंट MINT पढ़िबे ताकू बढ़िया पेपर ते भल लागियो अपन पढ़िया पई मिंट बोली पढ़िबे द मिंट बोली अछि ता पढ़िबे सेते दिए सो एंड सो कंपनी ओवर सब्सक्राइब ता माने बहुत पैसा आसला ताकू दरकार हेतला 5000 कोटी ताकू आसला 6000 कोटी आसला ओवर सब्सक्राइब.
Undersubscribed chances is very less. Kind of at the situation at the ascending, kind of they used to come. Otherwise, the merchant banker made khaibo se, thapad khaibo company. Baba tu kaun kaam kolu, wo issue undersubscribed. So these merchant banker facilitates the flow of work. The flow of work, which work? The public issue, in raising the money from the public, from the market. Market ru kemti paisa asbo, kemti collection habo, IPOs kemti successful habo. It is a responsibility of the merchant. Why? Company has made a plan. जे मते 1000 कोटी 500 कोटी 2000 कोटी आसिले मु ए प्रोजेक्ट रन कर मोर जति की प्रोसेसिंग स्टार्ट हेलानी कंपनी पाई आई विल गो फॉर माय कंपनीज एक्टिविटीज तो पैसा न आसे से बंद है because they may not get more loans from the bank एते लोन दबनी एते आनिवाटा भी advisable no because when there is a loan we have to pay the interest मो प्रॉफिट करे ये लॉस करे ये बंधा पड़े छंदा पड़े मोटे आने की लोन सुझिया पड़े काकू डिवेंचर होल्डर को और बॉन्ड होल्डर को और बैंक को हम जाकर लोन व्हाट इज डिवेंचर डिवेंचर मींस एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट राइट आपण देखिए 2000 टंका नोट तो बंद हेलेन कि 100 टंका 20 टंका जो भी नोट अछि ता पछपटे कोन लेखाई छी ता पछपटे लेखाई छी आई प्रॉमिस टू पे लेखाई छी ना नहीं अपन देखिए बात करिए जो which has been signed by governor of Reserve Bank of India. What does it mean? It is a promissory note. It's a promissory note. तादरे कौन होची RBI governor on behalf of the country signing with an authenticity that ये जो टंकाटा अच्छी 10 टंका 20 टंका 15 जहाँ भी अच्छी आर जो वैल्यू अच्छी राइट आर वैल्यू ये वैल्यू ही डिफाइन करची and it will be acceptable to the people of our country. That is the concept of promissory note. So let us look at what is merchant banking. Merchant banking deals with various processes required to raise capital from the market. Market through paisa kemiti asibo, kete systematic asibo, that is the role of the merchant. So if a company needs capital, it may get a loan from bank or it may ask an investment banker or merchant banker to sell its equity stake or raise the debt. Security and Exchange Board of India, in short we call SEBI, the capital market regulator. Amar bahut gude regulator achanti. So the SEBI, the capital market regulator, they mandates that no company can act as a merchant banker without holding a certificate of registered granted by SEBI. Only company without the approval, the certificate, when SEBI registration करे, the पढ़ेवी अपन को कितना category अच्छी. So Indian equity market, this is what I was just talking to you, how it is moving and what process is going to follow. Equity market, debt market, bond market, public issues. So the public issues are also monitored in a very systematic manner. The further public issue, Adani Astale, there are a lot of Hindenburg issues. Let us make it a case study and you need to find out. So the public issue is done by two methods. One is fixed price, another is book price or book building price, right? Right? So fixed price issuer at the outset decide the issue price and mention it in the offer document. IPO ase, offer document so the merchant banker on behalf of the company. So there is some details lekha hoita hai. Apan dekh paribe offer document aage printed asula, aaj printed asni. Now we will get it from online mode. आगे बहुत प्रिंटेड कॉपी फोपड़ा होता ब्रोकर ऑफिस रे हमें देखिजो से बस्ता बस्ता वंटा होतबो आ भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज भी थवाइता हम देखे some of we used to collect those things for आजकल रिसर्च करे पहले you don't have to go to this broker office, you can download this offer document.
So the basis of issue price is disclosed in the offer document. The basis of issue price. केते पैसा रे इटा आसीबो आपण मान जानछन्ती फेस वैल्यू गोटे issue of face value. Technically we call either 10 or 100, and if it is coming more than that, it is a premium price, right? ताटू अधिकार आसी प्रीमियम रखी ताटू कम रे आसी ताको हम डिस्काउंट को डिस्काउंट रे प्राय आसेनी पब्लिक इश्यू आसे. So the basis of issue price is disclosed. All the information is going to be disclosed in that offer document, where the issuer, the company, discloses in details about the quality and quantity factor justifying the issue price. Sabbu tadre details dekho kon pai achi, who are the promoters, what is the objective, ketole time paile net offer document down karo. There is second option we call book building option. The price of an issue is discovered on the basis of demand received from the prospective investors. Basically, HNI investment fund at various price levels. As per the SEBI, only electronically linked transparent facility is allowed to be used in case of book building. That is a public through one pool करंती केते प्राइस हबो ओडे बैंड तयार करते प्राइस बैंड 940 ରୁ 949 ओडे बैंड तयार करे and they used to settle that. A merchant banker or investment banker is appointed for a company for public issue. This is what we have already discussed. Can be opportunity how they are used to monitor. Now we come to the SEBI. SEBI has come up with a rules exclusive for the merchant bankers. This was rule, it has come up in 1992. There are so many amendments it has come up as of now. So that's not any important. At least we should know what is the rules that speaks about the merchant bank. What SEBI is trying to say, a merchant banker has been defined as any person who is engaged in the business of issue management. Issue management, the IPO management, public issue. Issue is public issue. IPO on the court. Issue management, either by making arrangements regarding selling, buying, or subscribing to securities, or acting as a manager, consultant advisor, or rendering corporate advisory services in relation to such issue management. What we try to see this, he is responsible, who? The investment banker or merchant banker is highly responsible for all sort of issue management activities. He may be a corporate advisor, he may be a consultant, he may be a manager, or whatever forms, but the object is smooth functioning of the public issue as per the directives of Security and Exchange Board of India. There is a guideline, say got a body other achi SEBI भितर को पसले जानी पड़िबे. SEBI भितर तक दियाइछि मर्चेंट बैंकिंग गाइडलाइंस दियाइछि बट थाके अराउंड 100 पेजेस अछि. सना जेतो ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट करंती ओडा वॉल्यूम बही भलिया करी को सबमिट करंती विथ ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन. In short, what we can say, I mean, you to derive to SEBI rule that merchant bank refers to an organization that underwrites securities and advises such clients on issues like corporate merger involving in the ownership of commercial ventures. Okay, so the merchant banker, he underwrites the securities. तामाने जदी प्रोडक्ट बिक्री हेलानी करेला तामाने अंडर सब्सक्राइब से करे तो दबन. Then the rest of the responsibility lies with the merchant banker. He acts like an underwriter to a particular securities. This is a guideline. There are different categories of merchant banker on the basis of their net worth. Merchant bankers are classified into 4 categories according to SEBI regulation. Merchant banking Act 1998. Category 1. There are 4 categories. Category 1, to carry on any activity relating to issue management and act as an advisor, consultant manager, underwriter, portfolio manager for capital issues.
Second category, to act an advisor, all these things, it is repeated with some capacity, right? Capacity means gone. Second category, how to get volume of capacity is more. Third category, the same with the better capacity approach. तामाने issue size को नेके define कराई है. किए कितने issue size को define करियो, there is a guideline. And category 4, to act as only an advisor or consultant to the issue. Semane underwriting is so काम qualified nahi. They act. So category 1, they are considered as the huge volume providers. अपन जानते हैं हम इतने market को बुझुचु ताको हमें justify करचु. Who is that category? Can anchor net worth अनुसारे एमाने सुने define करचु. हम इधर कहूँ different categories, large cap, mid cap, small cap. ये तो सब अपन जानी चाहिए तो large cap कौन, mid cap कौन, small cap कौन. जानी चाहिए ना कोई भी. ये सब जानिबा दरकार actually. मुझे कागु देखो नहीं. अपन मन जानी चाहिए तो पहले से ना मुझे कोई भी. कोई जो कोई भी ना. Large cap का लेखन तो 1 रू 100 कंपनी. ये वो खाता रे लिखी है. Mid cap होची 101 रू 250 and small cap होची 250 rest. हला तारो net worth टा भी कोची. आर होची कार कहले large cap होची 20,000 crores, more than 20,000 crores. का साइड रे लिख दियो. 1 रू 100 लिखते दी हाइपन देखी more than 20,000 crores तक. Large cap. Second हला के mid cap. Mid cap कहते 101 रू 250 हमें कोचे. का साइड रे लिख दियो तू 5,000 to 20,000 crores. तापर लला कौन small cap. Small cap हला कौन आपण करो rest to 251 onwards, right? So it हला less than 5,000 crores. It has been categorized. तार होपु हमें तक make it define करो, right? ये सब categorization रो बहुत important है stock market. तारो net worth, volume, standard. Again. Sir, mid cap और small cap टे कोई भी after. Madam, mid cap होची large cap हला 1 रू 100 है ना. Mid cap होची 101 रू 250 250 है ना. Small cap होची 251 onwards. तब फिगर उड़ा लिखिले 20,000 crores large cap, more than 20,000 crores. Greater than symbol दे देगी more than 20,000 crores. Mid cap हला 5,000 to 20,000 crores. Small cap हला 5,001 crores onwards. हमें देखुचु तो अपन माने ऑब्जर्व करके मो ऑब्जर्व करे म्यूचुअल फंड थ्रू मोर जोडा को स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट दे आर गिविंग मी गुड रिटर्न. लार्ज और मिड दोनी बर्तन आपण मन को मोटा ऑप्शन दोची चिंता करिया पई जे लार्ज कैप और मिड कैप काहे की भलो रिटर्न दो आपण मन को देली ऑप्शन. व्हेयरएज सब स्टॉक रे नहीं सब रे अपन काना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टाइम बहुत कम हमें एते कथा हेई पारुने. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट. जो फंड मैनेजर था म्यूचुअल फंड रे फंड मैनेजर he has to look at very closely what are the things are going on. म्यूचुअल फंड रे मेजर रोल होची फंड मैनेजर से किछि फंड को मॉनिटर करता है. सो मोर एनालिसिस रे मु देखुतली वर्तमान टाइम रे जो रिसेंट कंडीशन यूएस रे डेट क्राइसिस यूरोपियन कंट्रीज रे भी सेम हालत. बाकी ये जो युद्धटा चलची वार काई बंद करना थी गोटे ईगो क्राइसिस रे चलची तारो यूक्रेन और रशिया आ बाकी सब खुजर खुज हम तो नेबरिंग रे भारी बहुत बंधु अछंती. हम भारत चारिपटे बहुत बंधु अनेक बंधु सब अछंती. सो अपन ओवरऑली इफ यू स्टडी द एंटायर थिंग्स इज दिस टाइप. ओपेक कंट्री माने से माने केतले कोचिन हमें तेल एक्सट्रैक्ट करिवो करिवने हमर मेजर पैसा जाउची
हमर बजेट प्रोविजन में देखुथिबे ब्रंट जो क्रूड ऑयल आ गोटे हला डिफेंस इक्विपमेंट हमको डिफेंस इक्विपमेंट किनिया पे बाध्य काई कहले हम चारिपटे बहुत भयंकर शत्रु सब अच्छा भयंकर शत्रु सो हमको इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़िया पड़ियो अदरवाइज नोबडी नोज व्हेन दिस यूक्रेन इश्यू विल कम टू अस चाइना फाइना जो खुदर खुदर होचन these are all big issues so we have to सेत में हमर बहुत पैसा खर्च होछ हमें जोटा हम डेवलपमेंट रे खर्च करिया कथा मेजर होची हमर हमें दीटा शब्द को गोटे होची शिक्षा और होची स्वास्थ्य education and health these two are primary sector we are supposed to spend more money हमर से बड़े बहुत पैसा खर्च होले अपन देखिए मैडम सीताराम गोटे निर्मला मैडम अनाउंसमेंट करूथिले even again she has tried to focus last budget re we observe it was more on the MNC sector ए बजेट रे हमें देखछु स्टार्टअप पे भी बहुत फोकस करा जाई छी आहुरी करा जाई परथांता जो बजेट हमें कर एनीवे अपन स्टडी करिवे मिड कैप रे कोन रहला लार्ज कैप रे कोन रहला आ समय बहुत कम अच्छा अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर केमति से अपॉइंटमेंट होचंती the initial step for a company wishing to be a public is to hire an investment banker or investment manager or merchant banker to monitor its day-to-day activities. Otherwise, it is very difficult. And as per the SEBI guidelines, a company has to, is a mandate to appoint a merchant banker to monitor the entire activities of the public issue. The companies often choose the investment banker that can predict the highest valuation during the beauty contest phases instead of the best quality manager. So these are the joke apart for the analysis. Almost all IPO candidates select 2 or more investment bankers. अपन देखिए हम अपन देइची वेबसाइट देइची chittarghat.com रे जाई कि IPO को क्लिक करिवे 10-15 टा IPO देखिवे जो IPO सरी गलानी ताकू भी देखिवे कौन देखिवे ता दरे सपोज गोटे आईपीओ कंपनी अछि एक्स तार सरी गलानी ता माने तार जो पब्लिक इश्यू टेन्योर ता सरी गलानी ता दरे देखिवे से केते प्राइस रे आसीथिला दीटा जिंस सब बोल देखिवे केते प्राइस रे आसीथिला सपोज 45 टका इश्यू प्राइस रे आसीथिला जेतोले ओपन हला लिस्टिंग हला माने मार्केट रे जेतोले लिस्टिंग है कि जो न फर्स्ट डे ट्रेडिंग हला सेनो केते हला सेटा को सब बोले नजर रखियो सेटा very crucial can have excitement थाय समस्त पाखरे that I have purchased at 45 it should increase to 95 rupees समस्त मेरे expectation थाय सेटा को सब बोले स्टडी करबे केते पैसा हला and subsequently जो स्टॉक्स ता किनतन सब बोलता पछरे गोडे थे माने कोन माने कंपनी पछरे लागितिबे से कोन करूची तार प्रोडक्शन कोन होची तार सेल्स होची कि नहीं तार प्रोडक्ट रो डिमांड केते से प्रोडक्ट हम लोकलिटी रो अछि कि नहीं राइट try to understand that मुझे तो से जिम कथा कहतली मु जाई खोजली औषध दुकान बोला जिम लैबोरेटरी कोन अछि देखला से बता गैस को टिका दला कहला आपण एटा काई मागले कंपनी अनुसार मु कहले अरे आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपनी डूइंग देखला से गैस को टिका करछु व्हिच इज हाईली डिमांडेड ओके so these are the certain things which is of more important the primary manager or the merchant manager am coach also they are considered as the lead managers अपन देखिए आईपीओ रे मर्चेंट बैंकर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिखाई न था मोस्टली लिखाई था कौन द लीड मैनेजर्स एंड दे आर आल्सो additional bank also they are the co-managers are there are I had given here some example some well-known Indian names are Anam Securities, JM Finance, SBI Capital Limited, IDFC Capital जो IDFC पे बैंक ही जाती ICICI Security and some foreign banks भी अच्छे Morgan Stanley, Morgan Stanley सब भर्ती ही अच्छे थे अपन Axis अच्छी के ना जे समझते अच्छे right समझते आज जाइए मर्चेंट बैंकिंग डिविजन इतने मैं आपको I try to explain you there is a relationship issue of the investors कहती surplus भी जाऊँगी deficit भी जाऊँगी and SEBI is a part of this intermediaries are the regulator underwriters brokers and bankers they need to compliances return protection काको सबले investor को दरकार कौन compliances they should abide by the rules and regulation as per the SEBI guidelines investors always look for return and protection वो पैसा रेट दे डूबी न जाऊं they need to coordinate who the intermediaries should to provide guidelines and proper coordination issuer has to be more on the basis of capital market information
This picture shows the scope for the merchant banking division. So these are the some of the functions performed by the merchant banker: designing the timeline, pricing of the issue, time issue, kete duration, marketing, kemiti bikri habo, preparing the offer document, listing on stock exchange. It is a mandate. Kon mandate achi? Jo state re se company achi, ago se state re jadi stock exchange achi, he is mandated to list it in the local stock exchange. तापर से जुआड़ करती करो, बॉम्बे रे करो, एनएससी करती, जोटी करती करो, और local stock exchange से करे बात है. Then comes allotment and refund. Refund कहीं कैसला? हमारा अपन पढ़ी थी पे financial accounting पढ़ ले, share application, share allotment, share call money सब पढ़ी थी, बिजांचो भूली जाई थी. हाँ, जब भूली जाई थी किसी असुविधा नहीं. ये phase रे जाए. जबकि अधिका पैसा आसीगला मो पाखु ओवर सब्सक्राइब, सो आई नीड टू रिफंड तार स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अछि, जैसे टाइम पीरियड क्रॉस करिगला मते इंटरेस्ट सहित रिफंड करिया पड़े. एनीवे, द सम ऑफ द इंपोर्टेंट रोल of investment banker or moderating of public issues, corporate counseling, project counseling, pre-investment study, study. Yani investment Asia Purbu. To the banks, then issue management, portfolio management, mergers, acquisitions, advisory services, right? Now this is a trend, merger acquisition. Banks both merger acquisition. There was a merger between Centurion Bank of Punjab and HDFC Bank, right? So even the State Bank of Bikaner, State Bank of Travancore, State Bank of Jaipur, State Bank of Hyderabad. So now they are into one. So merger acquisition is going. Our banking sector is बहुत जोर चलती. Even Tata has taken over Coros long back, and airlines industry, सब industry देखते अपन जोर दे चलती. Another important is the foreign currency financing. That's more important. हम country पे. हम पाखरे थिला last budget रे हम देखुरु $600 billion थिला, है ना? $600 billion थिला. Foreign exchange हम कौन करूँ? हमें foreign exchange हमको निहाती दरकार. When we are doing imports, हम पाई जिनस किणवा पाई हेले हमको तांको currency हमको sufficient रखिया पड़ियो. So in economics there is a concept of balance of payment that we have to follow. So foreign exchange regulation we call FERA, Foreign Exchange Regulation Act. Subsequently it has come of FEMA, Foreign Exchange Management Act. It was body finance law. So very important terms to that. So if you don't have, I mean, like $600 billion dollars lage dele. Now the dollar price is increasing, right? 82 some amount achi. Tamane it must have gone down. But on 500 kete thibo am bakere. Can a dollar price badi gala? So dollar price atada kam kila. So that's an important things need to be understood. Then working capital financing. If everything, what is working capital? It is divided into two parts. One is gross working capital. Another is a net working capital. I'm talking to excess of current asset over current liabilities. Our man so purchase current asset kono, current liabilities kono. So difference between these two we consider working capital. हम पहले पैसा दरकार अछि चा पिया पई. चा पिया पई सब factory बसे देली सब कली machinery equipment all everything is set. Purchase the land, building, furniture सब गल. संध्या वाले कहली my office boy को can I have a cup of coffee? समय glass of $10 दियंतु. ओपन नहीं. Sorry. So what to do? चा टिके पिया पई नहीं पैसा. So in that case this is a joke apart. So I need to have sufficient working capital to purchase a raw material to monitor the day-to-day activities. So sometimes it means current asset. I mean gross working capital it's the total of current asset. Current asset of norale hame fauj asset, right? Okay. Then sales is one of the most important factor. Sales. ऊपर slide पे देखिए 1 second. Core function of merchant banker. मु एटा पठेई देबी आपण मान पाखु एटा तो हां सर ठीक है. Sales is another important factor. Sales. Why? Kahinki na everything sir upon take sound ta mute kar diyantu kono sound. Everything boils down to sales. Sales jodi achi, that means there is a demand of the product. Consumer is happy. हला अपन देखबे मझिरे गोटे आइला का कथा कहबा मैगी कथा कहबा. मैगी रे गोटे कोन बाहरला लीड फील्ड ना कोन बाहरला. हां जेटा देह पे बहुत खराब.
मने अछि आपण आस्थिला मझरे यस सर Yes sir. Yes sir. आपण माने को मैगी खाया बंद कर देले मध्य तो सर बंद कर दिलो तापर पुणी खाइलो केही बा छोट छुआ माने आगे गड़ी जिबे देखंतु नूडल्स इंडस्ट्री रे नूडल केते टॉप रो मन आसलेनी आ केते लोकल भी आसलेनी ना भर्ती हिचन बट मैगी मैगी ता टेस्ट कोथरे नहीं कि ता माने को से सब ठीक कर देला so that means मु ता कंपनी रो फेवर कोनी किछ कोनी मु कहयार ऑब्जेक्टिव होची जे कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन को से केमते धरि नीड्स को फुलफिल करूची नीड्स को से आपण मन पढिथे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नीड्स मास्लो नीड्स हायरार्की कहै कोन बेसिक नीड कम ना रोटी कपड़ा और मकान फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर पेटे खाई देला परे नेक्स्ट स्टेप होची कोन आमे स्कूल रु आस्तुलु अबसा हम टीवी नथिला हम छुआ माने आस्तुंदी से दौड़ी के आस्तुंदी पेटे खाई देले स्कूल रु हां खाई देई कि तापरे कोन व्हाट इज द नेक्स्ट गोटे नीड फुलफिल होला आउटे कोन आसीबो कहि परिबे छुआ मानो पय आपण मानो पय खेलिवा पई सर हेलो ऑडिबल यस सर यस सर आपण जले पेटे खाई देले तापरे कोन व्हाट नेक्स्ट छोटो छुआ मानो पय तापरे से मागियो मा रिमोट टा देलो ना नहीं ये जो 100 200 चैनल वाला आजकल छुआ टीवी देखु ना मोबाइल ले ताकर हे गेल सो अगेन अनदर नीड्स कम सो मास्लो कोन कले अब्राहम मास्लो ही हैज आइडेंटिफाइड physiological social safety status self actualization right तामने से हमको स्टेप नहीं कि गोटे जगह रे पहुंचे देले कोठी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेठी से पहुंचे देई कहले आंकर किछि नीड नाही ए स्टेप रे जे पहुंच गेला से स्टेप रे के पहुंचला मुटी के जोक रे पे बाबा माने पहुंच गेले से स्टेप रे अन तांको गोटे पत्र खाइ देले 100 वर्ष बंचिले तांकर गोटिए नीड कोन ना आत्मा विथ परमात्मा केमति मिलन हबो है ना नहीं तांकर गोटिए से ध्यान करचंती हिमालय रे बसिकी खाली देह रे बसिकी ध्यान करचंती तांकर गोटिए नीड हमर त सहस नीड भर्ती गछ वांट्स द अनलिमिटेड नीड तो छलन तो वांट्स द अनलिमिटेड तांकर गोटिए नीड कोन आत्मा विथ परमात्मा केमति मिलन सेतन से माने कोन करचंती प्रज्ञा को स्थित करचंती आपण गोटे द्वितीय अध्याय भगवत गीता पढ़ते कि बाइबल पढ़ते कुरान पढ़ते भगवत गीता रे लिखा हिची स्थित प्रज्ञ सखा भाषा समाधित केशव सिद्धदिकिं प्रवासित सिद्धदिकिं प्रवासित वसित ए द्वितीय अध्याय सांख्य योग रे लिखा हिची आपण सब घर महत पढ़िए बुझिए आ बेसी समय वेस्ट करे अनदर इज द रिसर्च ओ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अदरवाइज काली रे जो एग्जांपल कहउतली बाजा स्कूटर मारुति केते सब गलाडी हां एबे तो आपन को फोर्ड पड़ेला जानछ ना नहीं ए मंचेस्टर रे फोर्ड मोटर तार सर्विस सेंटर थिला से तार तो अटैक करला फोर्ड पड़ेला जानछ ना नहीं Yes sir. अवर्ष रखिए ना हां हमर जने सार फोर्ड गाड़ी केनथिले कांदी पके माने जे बंद हो पूर्व रिपेयरिंग करिया पई गले पार्ट्स मिलिबन तो अल्टीमेटली जाओ से फोर्ड पड़ेले एते बहुत लोग पड़ेबे एते सब कंपनी चालू छी बर्तन आपको कहू हमें कोन downsizing, upsizing, all those stories are going on. Okay, so I'll move fast. Process of preparing the prospect. ये जो prospect document टा केमिति पढुची से भी underlying जब पढिकी तैयारी होची that is a legal document. It has to be followed. One of the most crucial aspect of issue management entails a plan for or theoretically and explanations of company business, right? Plan tools, explanation of company tools, how the company operates. That means it is the legal bindings as per the legislation, how it is followed. All this offer document has to be there. Lawyers, accountants, investment bankers, of course, company management work for countless hours to complete the initial draft or offer document in a town-bounded environment, right? अपन देखते हमें जो accountant कहूँ एठी बेसी रोलटा आसे कंपनी सेक्रेटरी वाला राइट जेतोळे गोटे पब्लिक इश्यू आसे कि कोन है चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ସେମାନେ बैलेंस शीट ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करंती
but major role it was like with the company secretary. तांको पाठटा से related है बहुत है how to monitor these activities and all, right? Then this is what related to offer document, those is totally. It contains all the details, or it is also called prospectus. हम जब admission करिया गले आपण माने DDC रे तले admission कले तार details लिखा है तादरे कोन अछि आपनकर सिलेबस अछि सिलेबस रे को बही आपण रेफर करिवे इवन किछि जगह रे लिखा है को टीचर पढेबे जेंति हमर group रे जो 10 days रा schedule दिया है. So all these things now everything is tech savvy na, so no need of going of the physical document. Paper is very shortage kana bamboo production बहुत कम होची, bamboo production हम country रे बहुत कम होची. I was talking to one of my friend who is working as a HR head in it's very tough to get bamboos. Kana but the production कमी लेले तो पेपर प्रोडक्शन कम कमी जीवो सो ताकू वेस्ट करंतुनी पेपर को केबे वेस्ट करियोने पानी तो अवस्था आवरी खराब. सो ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू, राइट? ए जिनस गुडा सो थाय ऑफर डॉक्यूमेंट है. सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलोंग विद द ऑफर डॉक्यूमेंट से तो कौन थाय ना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, राइट? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू द सेबी लीगल गाइडलाइंस, syndication agreement, escrow agreement. These are all some technical terms, not required for you. Okay, credit rating agencies, right? ICRA, ICRA, CARE, they need to follow this. There is a guidelines, it has to be followed. SEBI guidelines, Companies Act, of course. Nowadays it is not 1956. Ebe kete ache again? Companies Act. Oh year rebe am dauche 2013. Yes, very good. So now we are not writing. Our mind company has 1956. Now it has come up. Lot of changes it has come up. We go to AS accounting standard. We go to Security Contract Regulation Act 1956. Issue capital disclosure requirement 2019. All this has to be followed. Who are the parties involved with these activities? So syndicate members, underwriters, register, banker, bank तो निश्चित रहेगा कारण कहा थ्रू द ट्रांजैक्शन होगा ना पैसा जीवा से ऑडिटर, ब्रोकर, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लीगल कंसल्टेंट, काउंसिल और कंसल्टेंट आल्सो, ग्रांटिंग एजेंसी, advertisement and public relation, monitoring agencies. Advertisement part रे गोटा अच्छी there is a compulsory that the company has to publish in a business daily then they have to publish the advertisement. Now we'll come to the future of merchant banking in India, right? Prior to the enactment of Indian Company Act 1956, now it is 2013, managing agents acted as a merchant banker. They acted as the issue houses for the issues, evaluated project support, provided venture capital for new firms, etc. Right? Few shares broking firm also function as merchant banker. There is a concept it has come up in between. You can see the venture capital. There is a chapter called venture capitalist. आपनकर जो कौन था ना IPL रे कौन से कंपनी है बाइजू वो billions of dollars they have taken from the venture capitalists. There is another way of generating the fund. With the rapid growth in the number and size of issues made in the primary market, the need for specialized merchant banking services are badly needed. Specialized merchant banking services. It also Thila starting Greenless Bank is a foreign bank operated in the merchant banking region 1967, followed by Citibank 1970. Okay, Citibank tapore asla. SBI started its merchant banking division in 1972 and is followed by setting up a fully owned subsidiaries in 1980 named as SBI Capital Market Limited. The other nationalized banks and financial institutions like IDBI, IHI, Security Finance Limited, or Canbank Finance now it is, Bank of India, Samaste Bank wala bharti the private JM Finance, so DSP, Marelli, Lancer, DSP Financial Services, many people are involved with that.
I would button bond कर दीजिए से भी कार्बी वाला मत कहीं घरे बसन. So around over 1,100 merchant bankers operating in the countries. मु जतले MBA पढ़ुଥିଲି उत्कल यूनिवर्सिटी रे I did a project, but a summer internship project करिया पड़े. I did a project on merchant bankers in India. That time it was 4,400. Still I remember the statistics. 4,400 merchant bankers were there in India. Many of them they collapsed. Many of them they only as per their categories. Many of them they are monitoring their activities for the fixed deposit mobilization. किसी पैसा नहीं कि फेरार हो गले अपन तो जानते हैं बहुत लोग फेरार हो जाउछंती. ओडिशा is highest on that, and West Bengal रे हमर थिला सेटा कोन शारदा चिट फंड 3,000 crores नहीं पड़ेला कोन हैला अपन जना पड़नी. Odisha also they following the same process because they are not coming under any statutory or legal or legislative body. किछि नथला हमें सब greedy approach 100 टंका टा 1000 टंका हे जिवो हम पैसा पके दे आपण माने किछि किछि पकेइथिवे मुजा भाबुछि. So this is what the status of all India position. This is few IPOs merchant banking performance. Eta darkar nahi. This you can find out from the chittorgarh.com. Now it is 8:59. If anything is coming to the mind, we can discuss. Otherwise, we can सर wind up. स्लाइड ला जेमति दे देथिले दे दो ऐप या पूर्वटा सब देबी आगे सब एडा रखी कोन करिवि मोर तो किछि काम नै गयो ए सब आपण मान पई ही करिछि. हां सब दे दे आपण डोंट वरी आपण को ऑन टाइम रे पहुंच जिवो बेस्ट इवेंट सब थुआई कि सब छाडी आ किछि यदि पचारे पचारंतु कोन कुहतु आउ किछि पचारे अछि यदि आ गोटे क्वेश्चन इन दिस कि ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया ताले हम आपण माने सब डिग्री को धरंतनी नॉलेज को जान हला मोर सिंसियर रिक्वेस्ट आपण तो डिग्री एग्जामिनेशन तो आपण फेल हेलानी कि आज पर्यंत एमती कि गोटे लोक अछि जे डिग्री नेई नी पळेला सेटा कोथरे अछि सेटा सीए रे अछि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी आईसीडब्ल्यू सेतरे पिला माने आको को लिस्ट देखंती आको फेल लिस्ट परे पास लिस्ट एई जो एमबीए अछि हम यार अच्छा कमिंग अंडर पीपीयूटी कि उत्कल की कोड अछि एपन तो कि फेल हेलानी जे नाही जा से पर फेल है कि घरु पळेला कांती कांती नहीं. So don't worry for the examination, right? आपण मानकर मु जति पढौची सिलेबस रे अछि I speak more. Apart from the slides हम टिके चेष्टा करू अधिया कहया पई एथि पई जे किछि एक्सपोजर दरकार एथि पई हम I try बहुत जन आसे माइंड को स्किप करिया पड़े काना टाइम कांस्टेंट्स आर देयर. So we try to explain what is happening in the current market. I always try to focus on that because you need to have हम तो कहू analytical and applied studies. अपन एनालिसिस करिवे आ अप्लाई करिवे. अपन लीड मैनेजर ता कोन अपन पढिले सुनले किंतु बुझि पारना काई बुझि पारना का लीड मैनेजर ता के जानना से को मर्चेंट बैंकर आप जानना अपन से chittorgarh.com को आज जिबे निश्चिंत जिबे हला नल काली पचाई जाय के देखिबे कोन कोन एबे पब्लिक इश्यू अछि गोटे जोटा सरी आइछि ताकू नेबे तार वर्तमान प्राइस केते चलछि ताकू स्टडी करिवे. जदि पॉसिबल सेही कंपनी रो वेबसाइट को जाय कि तार एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करिकरी तार बैलेंस शीट को देखिबे. बैलेंस शीट रे केतरा जिंस देखिबे छोटिया छोटिया जिंस देखिबे जेन तार शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस डेट कैपिटल ए सब कोन कोन अछि टिके देखंतु हला देखले आपन को मजा आसीबा. हमें इन्वेस्टमेंट करबानी आई एम नॉट सेइंग यू इन्वेस्ट जो माने करछन इट्स गुड आपन ते जानिते बहुत जिंस बट जो माने आपन हमर भीतर बहुत यंगस्टर्स भी अछंती यू ट्राई टू गो थ्रू इट स्टडी करंतु स्टडी करिके आपन गोटे नोट शीट कर लिखंतु आर फ्यूचर कोन हबो ता प्रोडक्ट कोन अछि ता बैकग्राउंड रे कोन अछि राइट सेगुडा को हमहु टिके टिके देखिया. आउ किछि पचारिवे ना हमर आउ साथ हुए आस दिबेनी सकाळे 41 थला एबे कोन 29 को पळेलेन धीरे धीरे बहुत जल्दी बहुत कुछ पड़े बैक टू बैक हे गेले आपन बिटे कष्ट होउथबो हम बुझि पाछु बट anyhow we have to learn. So anything else you would like to ask me or should I wind up? Leave Marivi key. Right. Thank you very much and good day to all of you.
Thank you, sir. Thank you.